Yeah, hi. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Madhav? Yes, sir, you are audible. We will start within 3 or 4 minutes. I can't hear you. Can you hear me? Yes, sir, yes, sir. So, good evening, everyone. This side Isha, your host for event Agri Explore 21 Days Winter School Training Program, organized by Utkarsh Incubation Dr. PDKV Orkola in collaboration with ISHA, HRD, and Just Agriculture. We will cover 25 plus modules related to agriculture and agri entrepreneurship. The stakeholders, participants of this program are students, scientists, working professionals, farmers, and industry persons. In this program, we will discuss in detail of each topics: drone technology and agri-boats, hydroponics and polyhouse technology, rooftop farming and microgreens, saffron farming, pearl culture technology, biofloc fish farming technology, poultry and piggery training, dry flower technology, mushroom production, lot and artificial intelligence, SaaS and blockchain technology. So I welcome you all. Without taking much of your time, I would like to invite our honorable guest, Dr. Shyam Kumar Katta, humanitarian literate and rural economist, Atlas Corpus Scholar, Climate Based Fellow, Directorate of Program, Healthier International, Passing Gifts in India. Dr. Shyam Kumar Katta is a globally recognized agriculture and environmental impact with over 21 years of experience in driving innovation and development across the global south, and Atlas Corp scholar and climate based fellow. Dr. Katta has spearheaded 23 transformative projects and focused on sustainable agriculture, biodiversity, and women empowerment. Dr. Katta works includes partnering with 600 farmer produce companies, 60,000 self-help groups, 450 NGOs to promote circular economy, models that enhance millions of rural livelihoods while reducing environmental footprints. His leadership has mobilized over $112 million in investments towards ending hunger and poverty through sustainable value chains. With deep expertise and climate farming, sustainable business practices, and global food security, Dr. Katta advocates for green innovation in supply chains, holders of 5 international patents and authors of 5 international publications. Dr. Katta thought leadership has been influential in shaping an inclusive and sustainable global supply chains. So, sir, the stage is all yours. Please. Okay, thank you. Thank you very much. It's very interesting to know that more than 100 students are participating. I'm audible, right? Yes, sir, you are audible. It's very interesting to see more than 100 participants from across the country are participating. And this young generation is looking towards agriculture, climate smart agriculture, resilient agriculture, and value chains. So it's interesting that young generation is coming out and looking for it to build a resilient food security for the country and for the globe. So I wish all of them a good luck for this. Thank you for the opportunity, first of all, and wish Just Agriculture and a platform which is trying to uh, build the knowledge of the country, okay, and contribute for the bigger cause. So thank you for that introduction. It was lengthy, but yeah, I'm happy that you have a lot of information about me. Thank you so much for that. So I would like to start from one experience. Very recently, I was in COP29 summit, which happened in Azerbaijan, Baku. I was one of the delegates, participated in a couple of meetings at the same time, was one of couple on the panel for a couple of discussions on various sectors. So we had people from different sectors when we speak about indigenous communities working in agriculture, sustainable agriculture, regenerative agriculture. How can we
we try to promote biodiversity for agriculture. What is that hydroponic? What? So climate change, which is in agriculture. The biggest question mark is the monsoon has been shifted, which Sir, is sorry to interrupt you. Can you please turn on your camera? able to see me. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think I need to switch it off due to bandwidth. Okay. Every community was discussing about climate change and the consequences of climate change towards agriculture. I very recently have come up with a theory called 4C theory. You'll be able to find it on LinkedIn of my climate change plus COVID plus conflicts is equal to crisis, which is basically the food crisis. Food crises are a challenge. It's a global threat, and people are worried how to mitigate that. Actions happening across the world towards climate change. Let me come to this one thought. Now, young generation, we are here these days. There are a lot of universities, research institutions, scholars. I see a lot of doctors in this group who are the part of the students, part of this particular session. Doctors. So diploma holders, a lot of people, all of them have working towards agriculture in whichever capacity. There is a lot of information which is available. You see research stations which are available on climate, which are available for agriculture. So institutions like ICRISAT, institutions like FAO, you name any, they are working in agriculture sector. But the biggest question remains, how much information is consumed by the farmer in the agriculture sector, or the knowledge which is available, how much is been captured, or how much is been put in practical, is the biggest question. I'm sure most of you might be working in the agriculture field, who are doing already some kind of practices. But the question again remains the same. What is that you are doing? Are you trying to adapt the new practices which are available, which are user friendly, eco friendly, soil friendly, environment friendly, or consumer friendly? You and I are relying on agriculture. Food is something which is important for the universe to survive. Because of food scarcity, because of food which is not produced, people are experienced. So I think if you have read the latest news, 1 in every 3 people might be affected or born to expose for cancer because of the food consumptions, pesticide food consumptions which are having. And more than 50% of people will be diabetic in few years, just because of the food that we are consuming. Because of the adulterated food, it could be food which is been highly utilized on the pesticides and stuff like that. So my topic today, I'm going to discuss a bit about what are those few climate resilient agriculture methods which you and I can practice and contribute for this nation and contribute for the humanity, at the same time contribute to the environment. So here we are. I would be very happy if you can text in the group, in the chat, what are you experiencing now?
what is your experience about climate smart agriculture or climate resilience? What do you know? What are you aware of it? I would be very happy if you can start typing and putting in the chat. I would like to see some responses. Please go ahead. Yes, Sagar, go ahead. What do you feel about climate smart agriculture? What practices have you experienced or seen? Yeah. So, dear participants, our chat box is open. So, those who are interested to ask any question and I have any query, please ask. So I'm asking them to type in the chat what do they know about climate smart agriculture, or have they been experienced, or that did they practice anything? Did they do any kind of intervention? So I would like to see responses from them. Yeah, participants, please. Madhav Kumar, Dr. Suraj, Mohanai, please put it in the chat. Thank you, Vijay. Natural farming. You have sent me a direct message. That's really good, Vijay. Yes. Aerophonic towers. Okay, very nice. Come on. I want all of you. Mulching. Very good. Shuraj. Mulching practices. Good. Come on. We are 200 people here. I want more responses. Regenerate agriculture. Vijay Kumar. Good, good, good. Vertical farming. I hardly got 7 responses. Hydroponic. Precise farming. Organic farming. Okay. Inclusion of plant microbes. Very nice. Very nice. Very nice. Thank you for that responses. There, which means, which I understand you people are a little bit of aware what's happening in the agriculture sector. So we are piloting a model with couple of institutions on the ground. Now, agriculture has been exposed to vulnerable climate zones. So it's important for us agriculture systems or practices which need to get adjusted to the different climate zones. One, what we are trying to do is we are trying to build a local seed bank. So what we are doing is we are trying to pilot with the local soil a seed which grows there, and the same seed will become as a seed, and it comes, turns in 2-3 cycles. We want to convert it into the same local seed, which will become resilient for that particular soil, resilient for that particular climate zone, and at the same time, which can be helpful in terms of increasing the production. So one of the practices which we are trying to do is one. Second thing is it's important for us to have to create biodiversity with agriculture. For example, now honeybee plays a very key role in the nature. It's very critical that their presence is required. So we zones, therefore, by 20 to 30%. That's one practice which we are trying to do it. At the same time, for honeybees to live, we try to promote the biodiversity part. So biodiversity, when you try to promote it, it helps the environment. At the same time, it helps us to mitigate climate a bit from the part of the farmers. Now, there's another interesting thing towards it. When we are doing agriculture farming, we try to help the farmer to come up with
intercropping with their own cycles. Okay, without going for any kind of pesticides, we tell them to go for intercropping and try to create their own manure. For example, we try to promote in communities. We create farmer field schools. We educate them. We monitor them. We handhold them. We give all the required resources. We demonstrate field plots. We show within their own community. We demonstrate field plots on the practices and showcase to them that how the yield is happening and the quality of the production on that part. Also, what we do is we try to introduce biochar methods into the soil. We also try to do Jivamrit at the ground level itself for the communities. So when we pull up the farmers together, coming together, we educate them, we give them access towards the practices, we give them the videos, and also we handle with educated staff on ground and try to promote and convert that particular region towards regenerative agriculture. So, of course, natural farming, regenerative agriculture, things which keep happening on ground. Right now, I'm in a place called Nagarjuna Sagar Reserve Forest Area where we are trying to work with the tribals here who actually have naturally farming. There is no access. First of all, they don't have any kind of access for them to pesticides. Whatever grows there is naturally grown, and we try to market it for them. At the same time, we try to see that how we can safeguard that seed they have. It's a pure natural seed. It's not a fortified one. It's a pure natural seed, and that can be able to introduce into different soils so that germinations can be easy. At the same time, that can be resilient towards climate. Well, in some cases, what we are trying to do is farmers want to shift towards biodiversity. They don't want to go for agriculture because they say that agriculture is no longer making them profit. So we try to promote for them towards carbon sequestration, where they try to help with the biodiversity part, and that helps for us to mitigate climate, and the neighboring agriculture sector gets boosted just because of that kind of practices. So Heifer International works in 20 countries with different practices focus on food systems. So one is the production part, second is resilient path towards climate, third one is the value chain part. Now the biggest question remains here: food, all the food which is being produced, most of the food, green food, I'm speaking directly, gets wasted. Almost 30% of green food gets wasted pre harvesting, harvesting, and post harvesting. So now imagine if a farmer grows 100 kilos of tomatoes, almost 30 kilos of tomatoes have been wasted, which means we are wasting the food. At the same time, 30% direct loss to the customer, to the farmer. At the same time, 30% of food deficit is there for the country. So it's important to mitigate that particular challenge. So what we are trying to do is we are finding a proper supply chain. At the same time, we are trying to help them with a proper value chains. It could be anything. For example, now I will talk about the same tomato. There is tomato, half ripened tomato, or a fully ripened tomato, or sometimes tomatoes suddenly comes one particular time. There's a huge supply, demand is less. So those are the times where we help to came up with some kind of innovative ideas where we are helping the farmers with dehydrated machines, cold storages, and proper supply chains. So which can control the supply and demand. At the same time, food is not getting wasted. You dehydrated the tomato, it is ready to use just like your raw raw tomato. So you can pack it and it will have a shelf life of 6 months, 8 months, 12 months, even if you pack it well. You can convert it into gel
you can convert into the chips, you can convert them into a directly eatable food product. Okay. So such kind of innovations we are promoting on the ground to mitigate food security and try to help food systems within the country. I will stop here and I would like to take some questions if you have so that we can have an interactive session. Yeah, if you have any questions, you can type it in the chat. I'll stop here now. The chat box is open. I think you can start putting your questions. A great question. There's a question from Guru Raj. He asked me one question. Is agroforestry helpful for medicinal tree? Yes. So agroforestry can be of anything. Only thing is you need to create that carbon, carbon sequestration, okay, to create impact. It's very important for us. Now that's the reason if you even look at it's becoming a mandate now. Even the corporate companies, they need to report the carbon sequestration or the emissions reduced in their audit reports. It's become mandate. So therefore, that's a huge impact which has been created, and investment which is going towards agroforestry. It can be medicinal plants, it can be purely carbon sequestration, or it could be horticulture crops. You can do anything, but you see at a long run that these agroforestries are helpful for the nature, at the same time helpful for to boost agriculture systems. Okay. So there's one more question: why the local community seed bank is not widespread in our country? That's a very good question. That question has been asked by Vandana. Let's be realistic and pragmatic. You know how big the industry, the seed industry is. We all know, and it's been run by big companies. So it's difficult to switch over completely at a time. At the same time, it's very difficult to buy in the trust of the ground people at a time. So it takes a little while to slowly shift. Farmer needs to experience that. For them, it's mostly seeing and believing rather than we're telling. So that's the reason why there is no much scale up or impact which has been created in that particular sector. That's a very good question, Vandana. Thanks for asking that. So Dr. Sukumar asked, is the current agriculture scenario, what is the best method which you suggest for carbon sequestration? So good question, Sukumar. What I suggest is carbon sequestration. One is carbon sequestration. At the same time, the same plant needs to be useful to the community as well. So I promote horticulture. What happens through horticulture plants is, one is you get carbon sequestration. Second is at least the farmer will get some kind of crop from it. Thirdly, if it's not happening at a farmer level, at least the animals, wildlife will get some kind of food to eat. So that is the reason it's I promote carbon sequestration for horticulture crops. Good question. That's a very good question. So there's one more question from Pranab. Is there every crop has different preservation process? You are right. Yes, every crop has got different preservations. Okay, so we need to understand the moisture. We need to understand the product life shelf. Okay, a lot of things get involved, but yes, it's specific. So having a cold chain will help to an extent in the beginning, but to preserve it, there are different methods, there are different packages, there are different pulping methods which we need to follow. So, but that's a very good question. What I suggest to you is, if at all you get some time, try to visit ICRSAT. ICRSAT has got something called Guinea Bank.
They try to preserve seeds. They have seeds from 40,000 years of seeds. 40,000 years of seeds have been preserved there, and they try to cultivate every 4 years, 7 years, and again reproduce the seed and store it. And they're preserving seeds. So it's important that we need to look at in that model. Great. There's one more question. Sir, what are all the major sustainable management practices in agriculture to enhance carbon sequestration in terms of 5, 10, 20, 30% increase of carbon inputs to soil so that when we can particular? That's a very big question, Sindhu Shri. But definitely, I think you have my LinkedIn. You can connect me. I can try to help you out. It will take 30, 40 minutes to give out a high level information about that question, but definitely happy to help you out on that. Okay, there's one more question from Manisha. Sir, can we grow large height crops like wheat, barley in hydroponic systems on the place of soil? That's a good question. It is doable. So it is doable, but the question rises, is it economical? So you are when you are trying to do hydroponic, you also need to make profits out of that. So going for such kind of products in hydroponic may not be commercially valuable. So the answer I leave it to you, but there is possibility where you can use sun to hydroponic. Feasibility is there. Someone asked me about, sir, can you please provide some information about in hybrid seeds and seed guinea banks? So, Mr. Kumar Sahu, what I suggest you is you visit ICRISAT once. Okay, ICRISAT is a global organization which is working on seed bank. That's we call it as guinea bank. Okay, so they'll try to help you out. There are different courses where they will get information, or there is a basic information which is available on the website. You can pull it from there. Okay. There is somebody asking what are about the climate changes in organic farming, and we can preserve those seeds what have been died few days, sir. Okay. So in one important thing is anything natural or organically grown will have very short shelf life. So the shelf life is really little short. So it's important that we preserve them or try to consume them or try to convert into supply value chains immediately. So therefore, you can preserve the product. That's one straight practice which can be done. Sir, somebody asked this question, as the same saline lands increasing at rapid scale, how can we restore this into arable lands? It's a very sensitive question. Saline water is a big challenge, and nobody wants to talk about that. It affects agriculture, it affects livestock, affects livelihoods of people. It's important that we need to go for alternate farming in those regions. Okay. It's not just agriculture. You can look at it at different methods of farming, which that saline water helps. It could be probably it can be into fisheries or it can be into aquaculture, which they can look into. So that's good question. Thank you so much. Yeah. Any other questions before we close? Hydroponic farming, be organic. Can we grow without any chemical nutrient supply? Yes, absolutely. There are people who are already doing it. There are institutions who are working on it. So, a couple of places, what we are doing is we have a hydroponic, netted hydroponic methods where we have buyback guarantee, and that's purely naturally, organically grown, and it has got a market. And mostly we are doing it for vegetables. It's not just agriculture. It's for vegetables we are trying to do it, and even for leafy vegetables we are working on that part. It's doable. How do farmers preserve seeds at home? Wow, this is a very good question, Ritesh. For farmers, they can do it themselves. If you remember 30 years, 40 years back,
everybody had seed at their own home. They never bought the seed from outside. No, you got it right. 30, 40 years back. So I used to see that in my hometown, groundnuts, right? When they grow groundnuts, they keep the good seed groundnut at home for seed for the next season, and remaining they used to sell. Same thing with turmeric. Same thing with most of the agriculture products. So they used to have that practices. Because of the climate change now, because of aflatoxin, and because of the what we say different vulnerability communities, farmers are not interested to have the seed at their own home level. They're trying to go for to buy it from the companies, because they see that companies have publishing that 90%, 95% germinations. So that is the reason people are looking for that. Otherwise, earlier days, farmers used to have their own seed from their own land. That was the native seed. We call it as it was a native seed. But these days, that culture has been done, died. But right now, we are trying to promote at least community-based seed, local seed banks, which will help the community. So there is someone called, what's the new technology in organic farm to reduce pests? So organic farm itself doesn't have any kind of pests. Okay, we don't use any pests in the organic farming. So there's no question of pests. So there's one more question. Why food preservation practices not doing broadly like other countries? So it's a policy. It's a policy matter, but definitely we are working on that, and it's a confidential document right now. I cannot share it now, but it's a policy matter which we are working with the government and Niti Aayog, where we are trying to help work on it. So Sneha asked me this: in vertical hydroponic farming systems, how does the vertical gradient of microbial conditions, example temperature, humidity, influence? So these and all are being monitored, Sneha. Now the technologies has grown really well. Temperatures are being monitored. Even a smallholder farmer can go for it. He can buy it and use it in half acre of his land and try to make what we say guaranteed incomes out of that when he is doing this shaded net and using hydroponic systems. So those things are already there. So I missed out one question, sir. In your option, what should be the different steps taken to increase seed and less investment? Wow, this is something where everyone is looking at it. So, Mr. Kumar Sahu, uh, everybody wants less investment and more money, and everybody, including you and me. Someone gives a job, you want to do less work, and you want to get more salary. You will be very happy about it. So, but what's happening is over the past years, the soil has been contaminated. Now, farmer is not interested about soil contamination. He's only interested about his yield. So, to get that yield, even though there is no requirement or not, he still goes and uses pesticides, micronutrients. The soil will be having excess of micronutrients, but still he prefers, as a practice, he prefers, he buys and he tries to use it. Otherwise, India is promoting ZBNF, zero budget natural farming, which is absolutely says that no, they don't require any kind of micronutrients, they don't require any kind of supplements for agriculture. It's just naturally grown and it gives you good health. At the same time, it will fetch you good value and it's good for the soil as well. Okay, there's one more question. How can a graduate pursue in organic farming and get profits out of it? Yeah, Indurani, most of the tech companies or techies, they are shifting their careers. They're leaving their jobs and they're coming into hydroponic, or they're coming into organic farming or natural farming, and they're making money. So what is happening right now is, earlier we used to have naturally grown or organically grown food. Now it's completely shifting. Now it's complete, but period of time, complete shift will happen into natural or organic. Then the production increases at the time. Food will be available for all. Natural and organic food will be available for all. But
agriculture is one good thing where we see as a source of profits. At the same time, it is a responsible farming. We call it as responsible farming for people to work on it. So I request all of you to have a look at it. You are agriculture students, you are agriculture graduates, you are scientists, and you are scholars. So, but we need to be in responsible farming. We need to be responsible farming. The person who is consuming it, for him also we need to feel responsible. So it's important that we practice good practices. I will stop here. I think we got enough questions. I'll stop here, and I would like to check. Uh, so Thank you, sir. It's an honor for Just Agriculture that you joined today's session. It is such a wonderful and delightful lecture. that they cater to directly to the table and the supply chains and value chains. For example, I will give now organizations like Walmart is trying to promote even the supply chain part as EV friendly. Basically, they're converting zero emissions practices towards your last mile delivery. So, some sustainable practices may not be everything can be monetized, but some changes they're trying to bring in. I know a company called Nobrak who are working on farming to the last mile. They're trying to convert everything and calculate carbon emissions and try to promote every food we are eating is sustainable. So those kind of practices are available in the market. Can you please share the contact details of dealers who purchase the dried vegetables in and around Hyderabad? And definitely, Dr. Sukumar, you can reach out to me in LinkedIn, or you can what we say reach out to who हमारा food processing society. They can help you out. Okay, or you can reach out to me. I am sharing my LinkedIn here account to everyone, all of you. You can follow me on my LinkedIn so that I'm very happy to help you all, to support you. And just agriculture is as a good platform which has been almost, I think, more than some 10,000 students till now. They have trained, promoted, and made them an entrepreneurs towards agriculture. Okay, a great hands off to just agriculture and their commitment to the community and society and for the agriculture sector. Thank you so much for taking and giving this opportunity for us. I'll stop here. If there is anything else, we'll stay talk. Yeah, Thank you over to so you. much, sir. So, dear participants, our next guest is with us, Deepak Jain sir, Director General Federation of Indian Industry, Chairperson, Chairman, FII Foundation, Member Academic Council, Chaudhry Bansilal University, Bilwani, Member Academic Council, StarX University, Gurugram, President, Indian Chapter, JP Koralla Foundation, National Working President and Spokesperson, Digambar Jain Mahasmiti, State President, Lagu Udyog Bharti, Haryana 2014 to 2019, Director HSIIDC 2015 to 2017, Chairman Advisory of Council on Economic Affairs BJP 2013 to 2015. So, Deepak Jain sir, the stage is all yours, please.
Dear participants, Deepak Jain sir will join within 4 to 5 minutes, so please wait. So you can start.
Sir, please unmute yourself. मैडम के नंबर पे डायल कर। हाँ, ये नंबर पे डायल करके बोले। Yes, sir, your voice is audible. ऑल राइट। शुड आई स्टार्ट? थोड़ा। Yes, sir. Sir, you can please start. हेलो। Yes, sir, your voice is audible. Can you please turn on your camera? ये चल रहा है। ये चल रहा है। देखिए, मैं दूसरे सिस्टम से देखता हूँ, उसमें अगर कैमरा चल चल गया तो देखते हैं। चलता है। Okay, sir. Sir, your voice is not audible. अब आ रही मेरी आवाज? Yes, sir, you are audible. जितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं ना, तो आदमी भूल ही जाता है कि क्या बोलने के लिए खड़े हुए थे। और टेक्नोलॉजी में उलझ करके हम रह गए। आप सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये हमारे जस्ट एग्रीकल्चर की टीम मुझे हर साल कभी कभी मेरी बातों को सुनने के लिए कनेक्ट करते हैं। मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे समझते हैं कि मैं शायद कुछ बोल दूं एग्रीकल्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर
लिसनिंग टू मी। और मेरी जो एग्रीकल्चर की वेग बातें हैं वो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, देश में भी और सरकार में भी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी बात पूरी कहने की। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को 2015 में स्टार्ट हुआ, और अभी इस साल 2025 में हमको पूरे 10 साल हो रहे हैं। और मैं ये इस सब के लिए पूरे दुनिया के 60 देशों में, जहाँ जहाँ हमारी टीमें मौजूद हैं, 60 देशों में हमारी टीम मौजूद हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस मिशन के साथ अपने आप को जोड़ा है। और हम जब एग्रीकल्चर की आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी। जी। हमको समझना होगा कि एग्रीकल्चर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं आज, उसकी गंभीरता कितनी है। कहने को ये सेक्टर सिर्फ इकोनॉमी का 18% है, लेकिन 85 करोड़ लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। कई देशों को मिला करके भी 85 करोड़ नहीं होंगे, लेकिन हमारे भारत में 85 करोड़ लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। एमएसएमई के अंदर 28% इकोनॉमी का कंपोनेंट है, लेकिन 11 करोड़ मात्र एंटरप्राइज हैं। और अधिकतर मैं एमएसएमई की बात करता हूं, और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। सर्विस सेक्टर हमारा 54% ऑफ द इकोनॉमी है। ये 85 करोड़ और 11 करोड़ के अलावा जितने भी लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। ये तीन सेक्टर्स के अलावा इंडियन डायस्पोरा को हम केटर करते हैं। इंडियन डायस्पोरा हमारी एक रफ आइडिया के अनुमान से 10 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी को हैंडल करती है, जिसमें दुनिया की 15 से 20 बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ इंडियन डायस्पोरा ही हैंडल कर रहे हैं। वो एक बड़ा सेगमेंट है जिसको कि हम टच करते हैं, और हमारे इसीलिए पिछली बार जब मैं आपके बीच में आया था, हमारे 42 देशों के अंदर 42 कंट्रीज में ब्रांचेस थी। और आज जो मैं आपके बीच में आया हूं तो हमारी ब्रांचेस दुनिया के 60 देशों के अंदर हैं। इन सब ब्रांचेस का खाली इंडस्ट्री से सरोकार नहीं है, एक बहुत बड़ा सरोकार इन ब्रांचेस का एग्रीकल्चर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। आज इजराइल से हम कनेक्टेड हैं, न्यूजीलैंड से कनेक्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड हैं, और सीआईएस कंट्रीज कम से कम 10-15 कंट्रीज हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं। अफ्रीका के 13 देशों में हमारी ब्रांचेस हैं। लैटिन अमेरिका में 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका और कनाडा मिला करके करीब 24 शहरों में हम प्रेजेंट हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए, इतने सारे जगहों पर उसकी प्रेजेंस होना। हमारा न्यूज़लेटर दुनिया के आज 150 देशों में जाता है, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भारत की पॉजिटिव न्यूज़ वो सारे देशों के अंदर स्प्रेड करें, क्योंकि लोगों को झूठ जल्दी हजम होता है। देश में क्या क्या पॉजिटिविटी आ रही है, किस किस सेगमेंट के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, वो लोगों को पता नहीं चलता है। तो वो ही स्प्रेड करने के लिए, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्प्रेड करने के लिए नई जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है किस किस सेगमेंट के अंदर हैं, तो हम अपना न्यूज़लेटर निकालते हैं, दुनिया के 150 देशों में जाता है। जस्ट एग्रीकल्चर की टीम से भी मैं कहूँगा
कि हमारा न्यूज़लेटर अगर आपके पास मिलता है, नहीं तो हमको अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए, आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा। आप अपने जस्ट एग्रीकल्चर के मेंबर्स में उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। हमारा सीधा उसके अंदर कनेक्ट इंडिया की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ है, चाहे वो किस भी सेगमेंट के अंदर है। हम यानी हमारी टैगलाइन जो है वो भी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्डिंग नेशन, ये हमारी टैगलाइन है। तो इस टैगलाइन के साथ में हमारा भाव उसके पीछे का यही है, किसी भी सेगमेंट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एंटरप्रेन्योर ने कैप्चर करना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएगी, ये मैं मानता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर को ही डेडिकेटेड हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कुछ नेता लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं किसान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, और वो हमारे साथ उन्होंने एमओयू किया हुआ है। हमने उनको सीधा ये बताया है कि भाई आप किसान को 5,000 रुपये एकड़ दिया, 6,000 रुपये एकड़ दिया, 4,000 रुपये एकड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आप वोट लेने के लिए दे रहे हैं। आपने अगर कुछ करना है तो एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए कीजिए। पिछले 70 सालों में इवन आज तक भी एग्रीकल्चर के लिए हमने कम किया है, और हम वोट की दृष्टि से यदि हम किसान को कुछ देते हैं वो वेलकम है स्टेप, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जो कि एक डेंजरस चीज है। और जो फ्री बीज हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर टेक्निकली हमारे बीच में कई साइंटिस्ट भी होंगे, 5 लाख रुपए पर एकड़ की यील्ड कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिसको हम नहीं हैंडल कर सकते। आराम से 5 लाख रुपए एकड़ की यील्ड आ सकती है। टेक्निकली अगर हम चलेंगे, जो नई नई पद्धतियां आ रही है, हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ग्लास हाउसेज हैं, जिस तरह से भी नई टेक्निक आ रही है, उसमें 5 लाख रुपए एकड़ की यील्ड कोई बड़ी चीज नहीं है। हम ले सकते हैं। लेने का फायदा ये होगा, किसान की अगली पीढ़ी वो किसानी की तरफ आएगी। आज वो खेत में हल नहीं चलाना चाहता, वो चाहता है कि मेरे को टेबल जॉब मिल जाए, डेस्क जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। किसानी से अच्छी कोई चीज नहीं है। तो ये एक जो गलत ट्रेंड अगली पीढ़ी में आ रहा है, हम चाह रहे हैं उसको रिवर्स हो जाए। $50 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट आज के दिन में भारत से है। तो मैं ये चाहता हूँ भी हम साइंटिस्टों के साथ बैठ करके इसकी प्लानिंग करें कि $50 बिलियन से बढ़कर के वो एक्सपोर्ट कैसे हमारी $100 बिलियन पे पहुंचे। और जो एक्सटेंडेड कंपोनेंट है नेक्स्ट $50 बिलियन का, वो रॉ प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट ना करें, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। चाहे वो फ्रीज ड्राइड हो, चाहे एब्सोल्युटली ड्राइड चीज हो, चाहे कोल्ड फ्रोजन चीजें हो, चाहे कुछ और प्रोसेसिंग करके उसके अंदर हम लाएं, लेकिन वो प्रोसेस्ड चीज बाहर जानी चाहिए, देश से वैल्यू एडिशन आना चाहिए। एग्रीकल्चर में आज के दिन में कोई कमी नहीं है। दो ही चीज की कमी है, पहली एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा वैल्यू एडिशन। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, यानी हमारी फसल खराब हो जाती है, 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ की फसल खराब हो जाती है हमारी, और उसका यानी टेक्निकली कहें तो उसका कोई औचित्य नहीं खराब होने का। जब इतना बड़ा देश है, इतने साधन हमारे पास हैं, फसल हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। फसल हमारी प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। किसान का पसीना उसके अंदर लगा हुआ है, देश की लागत लगी हुई है,
और देश की उम्मीदें उस फसल के साथ लगी हुई हैं, वो फसल खराब नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली उसको जैसे भी हैंडल करना है, हम लोग उसको हैंडल करके फसल को खराब होने से बचाएं, उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़े। पीछे हम बैठे हुए थे अपनी टीम के साथ, दो चीजें हमारे को निकल करके आई हैं। मैं थोड़ी वेग बातें कर रहा हूँ, आप लोग तो टेक्निकली एकदम साउंड हैं। मैं इकोनॉमी के एंगल से ज्यादा बात करता हूँ कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है किसान को, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जब उसकी क्रॉप तैयार हो गई, फील्ड में हमने काट ली, तुरंत से उसको क्रेडिट अवेलेबल मिलना चाहिए, उसको फसल का मूल्य तुरंत मिलना चाहिए। ए है, A+1 है, A+2 है, वो बात दीगर है। लेकिन किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। उस कैपेसिटी के ना होने के कारण से जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, उसका नाजायज फायदा उठा करके और उसको खराब करते हैं। दे ट्राई टू स्क्वीज द प्राइसिंग आउट ऑफ द फार्मर। फार्मर को फार्म गेट के ऊपर जो फसल का दाम मिलता है, वो सुन करके भी दुख होता है बड़ा कि ये हमारे फार्मर को फार्म गेट के ऊपर फसल का दाम मिल रहा है। स्टोरेज फैसिलिटी और प्रोसेसिंग फैसिलिटी, वो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो जाए, ब्लॉक वाइज हो जाए, आइडियली तो 5-7 गांव को मिला करके स्टोरेज और फ्रीजिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो एक बड़ी चीज सारे देश के अंदर होगी। और मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे करीब 1,000 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में। वो यूनिवर्सिटीज फार्मिंग के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन ला सकते हैं, प्रोसेसिंग कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज उनको चलाने चाहिए। वो एक बहुत बड़ी सेवा होगी देश की, और वो बड़ी सेवा होगी एग्रीकल्चर सेगमेंट की, अगर हम बच्चों को सिखाएं। अभी मैं अपने से पहले स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने बताया अभी ट्रेडिशनली हम कैसे सीड प्रिजर्व करते थे। मैं जब बहुत छोटा होता था तो मैंने सुना था अभी हमारे देश में 600-700 के करीब वेराइटीज चावल की हुआ करती थी। यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए चावल अलग से, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो स्टूडेंट है उसके लिए चावल अलग था। जो साधु हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए चावल अलग था। जो किसान है, मेहनत करता है, उसके लिए चावल अलग था। आहिस्ता 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 जो मॉडर्नाइजेशन, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने खोई भी हैं। बहुत सारी वैरायटीज जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स की, वो हमने खो दी हैं। आज मेरे पास कॉटन ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रधान आए थे कुछ दिन पहले। उनकी चिंता ये थी कि हमारी कॉटन ना तो क्वालिटी में अच्छी है और ना ही क्वांटिटी में सफिशिएंट कॉटन है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, और पीयूष भाई को भी मैंने लिखा, जो पीयूष गोयल जी इसका मंत्रालय देखते थे, भाई आप सारे देश में कॉटन की स्टडी करके कम से कम 5,000 करोड़ का कॉटन मिशन वो आगे निकालिए। जो अच्छी क्रॉप है उसको प्रिजर्व करें। जो सारे विश्व में बेस्ट कॉटन है, चाहे इजिप्शियन कॉटन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आती, चाहे जहां से भी आती हो, उसके ऊपर रिसर्च करें, वो हमारे देश में होनी चाहिए। हमारा देश कितना एडवांस था कि यहाँ से जो हमारा कपड़ा है वो विदेश की मंडियों में ब्लैक में बिकता था। अब हर चीज हम इंपोर्ट करने की नौबत में आ गए हैं। बीच के पीरियड में जो हमने खोया है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको रिकैप्चर करने की जरूरत है। इसके अंदर जो हमारे जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि किसानी में लगे लोगों के साथ मिल कर के
मॉड्यूल्स डेवलप करें। जैसे कुछ मॉड्यूल्स हमने निकाले, अभी ट्रेनिंग कीजिए, किसानों की ट्रेनिंग कीजिए, यहाँ जितने लोगों की ट्रेनिंग हो सकती है यहाँ करें। इसराइल से एक्सपर्ट बुला करके उनकी ट्रेनिंग की क्लासेस ली जाएं। सबको तो इसराइल भेजना संभव नहीं होगा, लेकिन वहां से एक्सपर्ट्स को बुला करके स्टेट लेवल पे दो दो चार चार एक्सपर्ट्स को बुला करके ट्रेनिंग कराएं, 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, और उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाए। तो वो बच्चे जो सीखेंगे उनको इजी ऑफ फाइनेंस करके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इजी करके, वो नई तकनीक से फसल करना सीख जाएंगे। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशल क्लासेस हमारे जो एमबीए कॉलेजेस हैं उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को हमको सिखाना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर में कैसे आ सकती है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी इंडक्शन हम कर सकते हैं, हमारी जितनी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंडक्शन जैसे भी हम कर सकते हैं, और उसमें भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के बना करके, आजकल तो यूट्यूब के लेसन्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, सब जगह तुरंत से प्रचारित प्रसारित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफपीओस के माध्यम से। और फिर मार्केटिंग के लिए ओएनडीसी हमारे पास है, जेम का पोर्टल हमारे पास है, और भी प्राइवेट पोर्टल्स हैं जहां हम मार्केटिंग कर सकते हैं। वो हम अपने लोगों को करनी चाहिए। कुछ स्टेट्स वाले पीछे आए थे, उनको भी हमने सजेस्ट किया, भाई आप अपनी स्टेट में क्या करते हो, यानी आपकी क्रॉप दुनिया के बाजार में क्यों नहीं जानी चाहिए। आपकी एक फसल के अंदर अगर 70% वाटर कंटेंट है, 60% वाटर कंटेंट है, तो जहाज का भाड़ा आपके प्रोडक्ट को मार देगा। यही स्टेट में हम ड्राइंग टेक्नोलॉजी ला करके उसको सुखाएं और प्रोसेस करके उसको पैक करें प्रॉपरली, ताकि एक्सपोर्ट की मार्केट में वो प्रोडक्ट जा सके। फॉर्चुनेटली वो स्टेट ने हमारी बात सुनी है। अभी 1 साल में करीब 250 के करीब एंटरप्रेन्योर्स वहां पर ड्राई करके और प्रोडक्ट्स को पैकेज कर रहे हैं प्रॉपरली, और नए पोर्टल्स के माध्यम से उनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है मिडिल ईस्ट के बाजार में। एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में भी जाएगी। तो ये जो लोग इस चीज को ध्यान से सुनते हैं कि मैंने वो चीज इजी है कि कोई ब्रोकर अपना ट्रक लेके खड़ा है, आपने माल लादा और उसको ट्रक में लोड किया और पैसा गिन लिया। लेकिन उससे बेहतर यह है कि एक एग्रीकल्चर के बेनिफिट के लिए, अपने एरिया के बेनिफिट के लिए, उसको फ्रीज, उसको ड्राई करके, प्रॉपर पैक करके, थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन उसमें करने का अभ्यास होना चाहिए किसान को भी। वैल्यू एडिशन इज द की। आज के दिन में वैल्यू एडिशन ही सब कुछ है। और जो हमारे नए नए पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से आप ग्लोबल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत पैकेजिंग की क्लासेस हैं। हमारे जो एमएसएमई वाले हैं वो पैकेजिंग के बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का इंडक्शन करना है वो भी ट्रेनिंग देते हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाले भी ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की। उसका सिलेबस भी प्रॉपर डिजाइन करके वो किसानों को सिखा सकते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ना है। जो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा मेरे से, क्योंकि ज्यादा विद्वान लोग पहले बोल चुके हैं। यानी ड्रिप इरिगेशन है, पॉली हाउसेज है, हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, मल्टी लेवल फार्मिंग है। अभी करीब 600 के करीब, 700 के करीब एफपीओज हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, जो हम कुछ कुछ सलाह देते हैं उसको वो लोग मानते हैं। तो उन 600 एफपीओस में करीब 6.25 लाख किसान हैं, जहां तक हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता अभी इस देश में 7.25 लाख किसानों की संख्या बहुत बड़ी है।
85 करोड़ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, हम सिर्फ 6.75 लाख, 0.1% से भी कम होगा शायद, ये कितने परसेंट में होगा, लेकिन ऐसा है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरा आप लोगों से, हमारे बीच में नौजवान भी हैं, साइंटिस्ट भी होंगे, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि दो चीज पे फोकस करें, वैल्यू एडिशन और एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो चीजों पे फोकस करने से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बदलाव आएगा और बहुत सुधार आएगा। हम केपेबल हैं, जितना लैंड बैंक हमारे पास है उस लैंड बैंक के चलते हुए हम केपेबल हैं ना सिर्फ अपना बल्कि आसपास के कई मुल्कों का पेट भर सकते हैं। $50 बिलियन की एक्सपोर्ट से बढ़ा करके 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। लैंड बैंक हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कागज फोल्ड कर दिए हैं स्पीच वाले। अब जो बताने जा रहा हूं वो इसके बाहर की चीज है। मैं आप लोगों से एक कहना चाहूंगा, हमारे अफ्रीका के कुछ देशों के लोग आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए। उनके पास एग्रीकल्चर की लैंड बहुत ज्यादा है, करने वाले नहीं हैं। कनाडा वाले भी आए थे पीछे मंत्री लोग, करने वाले नहीं हैं। लैंड बहुत भयंकर रूप से ज्यादा है। रशिया की टीम आई, लैंड बहुत ज्यादा है, करने वाले नहीं हैं। मैं जो देख रहा हूं, आप लोग भी वो देख रहे हैं क्या, कि अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। उन अपॉर्चुनिटीज को स्मेल कीजिए। देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, आप नेट के ऊपर पूरे के पूरे कंट्री की रिसर्च कर सकते हो। बिफोर यू स्टेप ऑन दैट सॉइल आपको सारी जानकारी होगी। आप क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज अवेलेबल है, वो सारी जानकारी होगी। हमारी हेल्प कहीं पर भी चाहिए, किसी को 500 एकड़ का फॉर्म चाहिए, किसी को 1000 एकड़ का चाहिए, 5000 एकड़ का फार्मिंग करनी है, अपने दिल में हौसला करो, कदम बाहर निकालो। देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपकी हेल्प करेंगी और बढ़िया से आप फार्मिंग बाहर जाकर के कर सकते हैं। हमारी कहीं पर हेल्प की जरूरत हो, आप जो भी उपज वहां बनाएं, आपको लगता है कि अमेरिका में बिक जाएगी, तो हम अमेरिका वाले अपने मॉड्यूल को बेच करके आपका टोटल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। भाई जाओ अपनी फसल बेचो यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज फार्मिंग सेक्टर में भर के हैं, आप लोग करने वाले होने चाहिए। मेरी आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी स्पीच थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अब कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। So, dear participants, our chat box is open. So, those who are interested to ask any question, please ask. डॉक्टर सुकुमार से एक क्वेश्चन आया है, इज FII offering any grants or funding to the agricultural entrepreneurs?
हमारी तरफ से कोई ग्रांट्स या फंडिंग नहीं है। हमारा स्टार्टअप डिवीजन है, वो हेल्प करते हैं जो लोग स्टार्टअप अपना सेटअप करना चाहेंगे। रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको पड़ेगा, और आजकल एक्सपर्ट्स भी हैं जो लोग आपकी हेल्प कर देंगे इस फील्ड के अंदर। दूसरा सवाल आया है, हाउ शुड एफपीओज कोलैबोरेट विद एफआईआई। हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि इंडिविजुअली हम एफपीओज को हैंडल कर पाएं। अगर एफपीओज किसी चेंबर के थ्रू आते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आते हैं तो हम लोग डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे, या किसी सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन कोई एफपीओज करता है, जैसे कोई वेजिटेबल का है, कोई व्हीट का है, या कोई राइस का है, ऐसा किसी सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। यानी ओवरसीज मार्केट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम चैम्बर एक्टिविटी से ज़्यादा डेविएट नहीं करते। तीसरा है, विल यू प्रोवाइड एनी मार्केटिंग असिस्टेंस, कैन वी टेक मेंबरशिप इन एफआईआई। सेक्टोरल असिस्टेंस हम दे सकते हैं। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की एक ग्रुप बना करके और हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। सेक्टोरल इंडिविजुअल मेंबरशिप लेने से आपको एडवांटेज नहीं होगा। सेक्टोरल ग्रुप अगर हमारे पास आता है तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे, तो वो आपके सेक्टर की हम असिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है जो नॉर्मल चेंबर एक्टिविटीज को केटर करते हैं। और ये मार्केटिंग का बड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड काम है जो एक्सपर्ट्स ही करते हैं। हम लोग उसमें एक्सपर्ट्स को आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपको रास्ता दिखा देंगे, एक्सपोर्ट का कैसे है, विद इन कंट्री कैसे है, सब कर सकते हैं। फिर एक सवाल है, आवर एफपीओ रिप्रेजेंट्स विथ मिलेट्स एंड पल्सेस विच इज प्रमोटेड बाय आईआईएमआर हैदराबाद। थैंक यू सर। आपका नाम नंबर मिल सकता है क्या? ये मैडम आप देखिए, आपने जिसको देना हो वो दीजिए। हमने आपको दिया हुआ है, जिसने कनेक्ट करना हो वो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, one question is there. What is procedure to export agriculture goods and documents required? ये हम एक्सपर्ट का नंबर आपको दे देंगे, वो एक्सपर्ट जो है सारी आपकी गाइडेंस कर देंगे। जो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट्स जो हैं इस काम के फील्ड के अंदर दर्जनों के हिसाब से अवेलेबल है। कुछ हमारे पैनल पे भी हैं, वो हम दे देंगे आपको। अलग से आप हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा, उनको कनेक्ट भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. On behalf of everyone here, I want to say a big thank you. Your contribution made this session extraordinary, meaningful, and memorable. So, thank you so much, sir. It is such an wonderful and delightful lecture. थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। Dear participants, this is all the today's session. Tomorrow's schedule you will get in the WhatsApp group. See you tomorrow. थैंक यू।